हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर वन एंड ओनली फार्मेसी। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चैप्टर साइज रिडक्शन के बारे में। सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है साइज रिडक्शन, कंटेंट अबाउट दिस टॉपिक, साइज रिडक्शन, objectives of size reduction, mechanism of size reduction, laws governing of size reduction, hammer mill, ball mill, edge runner mill, end runner mill and fluid energy mill। मतलब मतलब कि साइज रिडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है साइज रिडक्शन के, वो देखेंगे। मैकेनिज्म मतलब किन किन प्रकार से हम साइज रिडक्शन कर सकते हैं, वो देखेंगे। कौन कौन से लॉज है साइज रिडक्शन में, वो भी देखेंगे। और 5 मिल, ये इंपॉर्टेंट मिल्स है। हैमर मिल, बॉल मिल, एज रनर मिल, एंड रनर मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल फॉर साइज रिडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, साइज रिडक्शन। Definition of size reduction. Size reduction is a process of reducing large solid unit masses, vegetables, or chemical substances into small unit masses. That means, in simple language, size reduction means the conversion of large particles into small particles, or coarse particles or fine particles. Size reduction is commonly employed in pharmaceutical industries. Size reduction process is also referred to as a continuation and grinding. Grinding means small particles, making small particles. When the particle size of solid is reduced by mechanical means, it is known as milling. The size reduction operation can be divided into two major categories depending on whether the material is a solid or a liquid. If the material is solid, the process is called grinding and cutting. If it is liquid, emulsification or atomization. These are the size reduction. In simple language, size reduction means conversion of large particles into small particles or coarse particle into fine particles. चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन। क्यों साइज रिडक्शन इंपॉर्टेंट है? साइज रिडक्शन लीड्स टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया वी डू साइज रिडक्शन। Second, pharmaceutical capsules in supplements, that is, powder inhaled directly into the lungs, or suppositories and ointments required particle size to be below 60 mm size. So size reduction is required to increase the therapeutic effectiveness of certain drugs by reducing the particle size. Size reduction produces particles in narrow size range. Mixing of powders with narrow size range is easier and uniform. For mixing purposes, we do size reduction. Or last objectives, pharmaceutical suspensions require fine particle size. It reduces rate of sedimentation. These are the some objectives of size reduction. Next point, mechanism of size reduction. There are four main mechanisms: impact, compression, cutting, and alteration. Let's say what's come impact. Impact means this in all hammer or a bar at a high speed. That means hammer mill. Second, compression. Compression means compress and make a large particle, convert large particle into small particles. Particle crush between rollers by the application of force. That is roller mill. Third, cutting. The material cut by a sharp blade. Example, cutter mill. Attrition arising from particles scraping against one another or rubbing action. That means fluid energy mill. There are four main mechanisms of size reduction: impact, compression, cutting, and attrition. In impact, hammer mill is in all. In compression, roller mill is in all. In cutting, cutter mill is in all. And in attrition, fluid energy mill is in all. Let's say, see, laws governing size reduction. Griffith theory. The amount of force to be applied depends on the crack length. These are the Griffith theory. Kick's law. Work required to reduce the size of a given quantity of material is constant for the same reduction ratio regardless of the original size. These are Kick's law. Rettinger's law. Work used for particular size reduction is directly proportional to the new surface produced. Bond's law. Work used to reduce particle size is proportional to the square root of the diameter
of the particle produced. There are four theories or laws come under the size reduction. They are Griffith theory, Kick's law, Rittinger's law, and Bond's law. Factors affecting size reduction. Which factors affect size reduction? Selection of meal. It is related to feed, meal product, safety, and economics. Second, factors related to nature of raw materials affecting size reduction. Hardness. It is easier to break soft material than hard materials. That is for iodine, hammer mill is used. हार्डनेस, अगर हमारा ड्रग प्रोडक्ट हार्ड होगा तो साइज रिड्यूस करने में हमको थोड़ी प्रॉब्लम होगी. अगर वो सॉफ्ट होगा तो ईजिली कोर्स पार्टिकल इंटू फाइन पार्टिकल्स वो कन्वर्ट हो जाएगा. फाइब्रस, these are tough in nature. A soft, tough material has more difficulty than a hard, brittle substance. Example, Raulfia, ginger. Here, cutters can be used. These, these are the factors affecting size reduction: hardness, fibrous, selection of meal. Second factors, elastic, sticky. Become soft during milling. Example, synthetic gums, waxes, resins. Low melting substances should be chilled before milling. These are milled using hammer, collide, or fluid energy mill. Second factors, melting point. Waxy substances, fats, and oils are soft during size reduction due to heat generated. This is avoided by cooling the mill and the substance. Second, hygroscopic. Certain substances absorb moisture content rapidly. This wet mass hampers the milling process. Example, potassium carbonate, cloth systems such as porcelain ball mill is used. These are the some factors affecting size reduction. चलो देखते हैं वन बाय वन. 5 मिल्स, उसमें से पहली हैमर मिल. प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल. It operates on the principle of impact between rapidly moving hammers mounted on rotor and the stationary powder metal. दोस्तों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव द प्रिंसिपल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल और एक्सेट्रा मिल्स. तो चलिए देखते हैं. हैमर मिल प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट. बस इतना लिख दिया तो प्रिंसिपल हो गया. पार्ट्स consist of metal casing enclosing a central shaft to which four or more swinging hammers are attached. Lower part of casing consists of a screen through which material can pass and collect in a suitable receiver. ये हो गए parts hammer mills के. Construction and working. A hammer mill is essentially a steel drum containing a vertical or horizontal rotating shaft or drum on which hammers are mounted. हम डायग्राम देखेंगे आगे. पहले कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के पार्ट्स देखते हैं. द हैमर स्विंग्स ऑन द एंड्स और फिक्स टू द सेंट्रल रोटर. द रोटर इज रोटेट्स एट अ हाई स्पीड इनसाइड द ड्रम व्हाइल metal is fed into a feed hopper. The metal is put into the hopper which is connected with the drum. The material is powdered to the desired size due to fast rotation of hammers and is collected under the screen. These are mainly operated at 1000 to 2500 revolution per minute, that means RPM, for the reduction of large size particles. High speed rotors uses 10,000 RPM speed. यूज क्या है हैमर मिल्स के? ब्रिटल मटेरियल इज बेस्ट फ्रैक्चर्ड बाय इम्पैक्ट फॉर फ्रॉम ब्लंट हैमर्स. फाइबरस मटेरियल इज बेस्ट रिड्यूस बाय कटिंग एजेस. ये देखो डायग्राम हैमर्स मिल्स के. बीच में एक शाफ्ट है, उसके साइड में से हैमर्स लगे हैं. फीड है, हम फीड से हमारे ड्रग प्रोडक्ट्स अंदर डालेंगे और ये शाफ्ट हैमर्स है वो सर्कुलर रिवॉल्यूशन पर घूमेंगे. मतलब कि फोर्स होगा, उसकी वजह से स्क्रीन है नीचे, हैमर मिल प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा हमारा छोटा हो गए. फीड से मटेरियल को इन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैमर्स और शाफ्ट सर्कुलर मोशन में घूमेंगे, छोटा हो जाएंगे. एडवांटेजेस क्या है इस मेथड्स के? इट इज़ रैपिड इन एक्शन,
and is capable of grinding many different types of materials. They are easy to install and operate. The operation is continuous. There is a little contamination of the product with metal abraded from the mill as surface move against each other. The particle size of the material to be reduced can be easily controlled by changing the speed of the rotor, hammer type, shape and size of the screen. ये हो गए इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. हीट बिल्डअप ड्यूरिंग मिलिंग इज मोर, देयरफॉर प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज पॉसिबल. मतलब कि हम फास्ट मोमेंट पे रोटेट करेंगे हमारे शाफ्ट को, इसकी वजह से हीट जनरेट होगी और उस हीट की वजह से हमारा प्रोडक्ट भी डिग्रेड हो सकता है. हैमर मिल्स कैनॉट बी एम्प्लॉयड टू मिल स्टिकी फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल्स. मतलब कि हैमर मिल्स हमारे हार्ड मटेरियल्स, ड्रग प्रोडक्ट्स, फाइब्रस ड्रग प्रोडक्ट्स और स्टिकी ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए उपयोगी नहीं है. ये हो गई इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस. सेकेंड है हमारी बॉल मिल प्रिंसिपल. इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन between the rapidly moving balls and the powder material both enclosed in a hollow cylinder. ये हो गया हमारे बॉल मिल का प्रिंसिपल. और आप अपनी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल इज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन. बस. पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स है बॉल मिल में? बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ a hollow cylinder mounted on a metallic frame such that it can be rotated along its longitudinal axis. Cylinder contains balls occupying 30 to 55% of mill volume. Weight of ball is constant. Size depends on the feed quantity and diameter of mill. Working. It at low speeds the ball roll over each other and attrition rubbing action will be predominant mode of action. Second, thus in the ball mill impact or attrition or both are responsible for size reduction. मतलब आप आपको सीधी बात में बताता हूँ मैं कि बॉल मिल में क्या होता है, हॉलो सिलेंडर रहता है और उसमें बॉल्स रहते हैं और वो बॉल्स मेटल्स के रहते हैं, सर्कुलर्स रहते हैं. अगर हम हॉलो सिलेंडर्स में हमारा ड्रग प्रोडक्ट डालेंगे और विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल्स दे आर रबिंग, दैट मीन्स हमारा ड्रग प्रोडक्ट्स दो बॉल मिल्स के बीच में आकर टूट जाएगा और स्मॉल बन जाएगा और उसकी साइज रिडक्ट हो जाएगी. मतलब rubbing with each other. Advantages: it can produce very fine powder. Ball mill is used for both wet and dry grinding processes. Toxic substances can be ground as the cylinder is closed system. Installation operation and labor costs are low. ये हो गए कुछ एडवांटेजेस बॉल मिल्स के. डिसएडवांटेज: द बॉल मिल इज़ अ वेरी नॉइसी मशीन. मतलब ये बहुत आवाज़ करती है. बॉल मिल इज़ अ स्लो प्रोसेस और ये बहुत स्लो भी है. सॉफ्ट फाइब्रस मटेरियल्स कैनॉट बी मिल बाय बॉल मिल. सॉफ्ट मटेरियल्स, फाइब्रस मटेरियल्स हम इसके थ्रू नहीं करें. डायग्राम में देखिए बॉल्स प्रेजेंट है, हॉलो सिलेंडर है, साइड में एक्सिस है और वो आरपीएम पे घूम रहा है. मतलब कि बॉल्स हमारे ड्रग प्रोडक्ट्स को एक के ऊपर एक अटैच होएंगे और रब होंगे. इसकी वजह से हमारा ड्रग प्रोडक्ट की साइज़ कम हो जाएगी. इसकी वजह से ये है बॉल मिल्स की डायग्राम. मतलब कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, प्रिंसिपल ये हो गए. ये देखिए लो स्पीड विथ स्लाइडिंग. सेकेंड डायग्राम हाई स्पीड विथ सेंट्रीफ्यूजिंग और थर्ड करेक्ट स्पीड विथ कैस्केडिंग. ये हो गए बॉल मिल्स के डायग्राम्स. यूजेस: stainless steel are preferred in the production of ophthalmic and parental products. Ball mill at low speed is used for milling dyes, pigments and insecticides. हमने दो मॉल्स बॉल में मतलब मिल्स देख लिए अब तक. हैमर मिल फर्स्ट और सेकंड बॉल मिल. और थर्ड वन एज रनर मिल. प्रिंसिपल ऑफ एज रनर मिल: द साइज रिडक्शन इज डन बाय क्रशिंग ड्यू टू हेवी वेट ऑफ स्टोन. इसमें स्टोन का यूज़ करते हैं हम. कंस्ट्रक्शन: इट कंसिस्ट ऑफ टू हेवी रोलर्स एंड मे वे सेवरल टन्स. मतलब भारी वजन के हम दो रोलर यूज़ करेंगे और उसके बीच में से हम हमारा ड्रग प्रोडक्ट पास करेंगे और वो एक के विद द हेल्प ऑफ क्रशिंग हम हमारी साइज रिडक्शन प्रोड्यूस करेंगे. द रोलर मूव ऑन अ बेड विच इज मेड अप ऑफ अ ग्रेनाइट और स्टोन. Each roller has a central shaft and revolve on its axis. The rollers are mounted on a horizontal shaft
and move around the bed. ये हो गए construction of edge runner mill. Working. The material to be ground is placed on the bed with the help of the scraper in such a way that it comes in the path of the stone wheel. These stones revolve on its axis and the same time travel around the shallow stone bed. The material is ground for a definite period. The powder is collected and passed through a sieve to get a powder required size. मतलब कि हमें कौन सी साइज़ की पाउडर चाहिए इसके लिए हम सीव्स यूज़ करेंगे और विद द हेल्प ऑफ सीव्स वी सेपरेट आउट द फाइन पार्टिकल्स और coarse particles. Advantages about this meal does not require attention during operation. मतलब कि ऑटोमेटिक प्रोसीजर है. एक बार हमने ड्रग प्रोडक्ट डाल दिए, मतलब हमारे प्रोडक्ट्स डाल दिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. डिसएडवांटेज: मोर स्पेस देन अदर मील, कंटामिनेशन, टाइम कंज्यूमिंग, नॉट यूज फॉर स्टिकी मटेरियल्स. स्टिकी मटेरियल्स ये हर मील का एक डिसएडवांटेज है. मतलब कि ज़्यादातर मील्स स्टिकी प्रोडक्ट्स नहीं रिड्यूस करती उनकी साइज़. इस मशीन के लिए बहुत जगह चाहिए होती है. कंटामिनेंट भी हो सकती है क्योंकि हम स्टोन और ग्रेनाइट यूज़ करते हैं. टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब कि लेंथी प्रोसेस है बहुत. यूजेस: ग्राइंडिंग टफ मटेरियल टू फाइन पाउडर. इस मेथड से हम भारी हार्ड मटेरियल को भी सॉफ्ट बना सकते हैं. ये हो गया एज रनर मिल. डायग्राम देखिए. शाफ्ट, दो शाफ्ट लगे हैं. मटेरियल बेड पे डाला है, नीचे बेस है. क्रैंक शाफ्ट है, रोलर्स है. विद द हेल्प ऑफ रोलर्स हमारे ड्रग प्रोडक्ट्स आर कन्वर्ट द कोर्स पार्टिकल इनटू फाइन पार्टिकल्स. ये देखिए डायग्राम. एज रनर मिल और एंड रनर मिल, देर आर द difference between two diagrams, edge runner mill and end runner mill. अच्छा देखते हैं फोर्थ मिल, end runner mill. End runner mill. Principle of end runner mill is size reduction is done by crushing due to heavy weight of steel pestle. Sharing stress is also involved during movement of mortar and pestle. ये होगा हमारा एंड रनर मिल का प्रिंसिपल. क्रशिंग. कंस्ट्रक्शन: इट कंसिडर एज अ मैकेनिकल मोटर पेस्टल. इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील मोटर विच इज फिक्स्ड टू अ प्लेट. द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर इज कनेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल शाफ्ट bearing a pulley so the plate with mortar can be rotated at a high speed. The pestle is dumbbell shape and bottom of pestle is flat. Construction of pestle is done in such a way that it can be raised from mortar by cleaning and emptying. ये हो गया हमारी कंस्ट्रक्शन इंटरनल मिल का. मोटर और पेस्टल के टाइप रहते हैं. वर्किंग: द मटेरियल टू बी ग्राउंड is placed in the motor. The motor revolves at a high speed. The revolving motor causes the pestle to revolve during this process. Size reduction is achieved. Advantages: end runner mill provides moderately fine powder and operates successfully with fibrous materials, bark, wood, fruits, leaves, etc. Wet grinding with very viscous materials such as ointments and paste is also possible. Disadvantage of end runner mill: not suitable for unbroken or slightly broken conditions of drug. ये हो गए प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल मिल. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ इंटरनल मिल. यूज़ फॉर फाइन ग्राइंडिंग. ये तो सबका यूज़ है, हम फाइन ग्राइंडिंग के लिए ही यूज़ करते हैं सब. ये देखिए डायग्राम. नीचे फ्लेंज प्लेट, bevel clop tying connected to motor, steel mortar, scrapers, pestle, dumbbell shape, bed and material. सिंपल डायग्राम. चलिए देखते हैं लास्ट हमारी मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल. प्रिंसिपल: इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन. It operates on the principle of impact and attrition. Parts of fluid energy mill consist of a loop of pipe with diameter 22 to 1000 20 to 200 millimeter.
The overall height of the pipe is 2 meter. Inlet for feed and a series of nozzles for air, inert gas, outlet with classifier which prevents the particles to pass until they become sufficiently fine. ये हो गए parts of fluid energy mill. Construction of fluid energy mill. It consists of a loop of pipe. It consists of a loop of pipe which has a diameter 20 to 200 mm, depending on the overall height of the loop, which may be up to about 2 mm or 2 meter. There is an inlet for the feed and a series of nozzles for the inlet of air or inert gas. It also has an outlet with a classifier which allows the air to escape but prevents the particles to pass until they become sufficiently fine. ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन फ्लूइड एनर्जी मिल का. पाइप रहती है लूप ऑफ पाइप, उसके डायमीटर 20 to 200 mm, मैक्सिमम 2 मीटर. देयर इज इनलेट फॉर फीड, series of nozzles, etc. Inert gas working. The air or inert gas is introduced with a very high pressure through the nozzles. हम क्या करते हैं, with the help of nozzles हम air pass करते हैं. Solids are introduced into air stream through inlet. Due to high degree of turbulence, impact and attritional forces occurs between the particles. The fine particles are collected through a classifier. Fluid energy mill reduces the particles 1 to 20 micron to get a very fine powder, A1 up to 5 micron. The material is pre-treated to reduce the particle size to the order of 100 mesh and then pass through fluid energy mill. ये होगा फ्लूइड एनर्जी मिल का वर्किंग. एयर पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ टर्बुलेंस, और आइट्रेशन हमारी पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल पार्टिकल्स में. यूजेस द मिल इज यूज टू ग्राइंड हीट सेंसिटिव मटेरियल टू फाइन पाउडर. द मिल इज यूज टू ग्राइंड दोज ड्रग्स विच हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी इज रिक्वायर्ड. ये होगा यूजेस. एडवांटेजेस, the mill is used to grind the material to fine powder. The particle size of powder can be controlled due to the use of classifier. There is no wear of the mill and hence there is no contamination of the product. It is useful for grinding heat sensitive substances such as sulfonamides, vitamins and antibiotics. Disadvantage, tendency of forming aggregates or agglomerates after milling. Aggregates मतलब दो ड्रग पार्टिकल्स कंबाइन हो जाएंगे और एक के ऊपर एक चिपक जाएंगे. जनरेशन ऑफ एमोर्फस कंटेंट ड्यू टू हाई एनर्जी इम्पैक्ट. फॉर्मेशन ऑफ अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स. हाई एनर्जी कंजम्पशन मतलब इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वो इसकी डिसएडवांटेज. ये देखिए डायग्राम. सॉलिड्स इनलेट, फ्लूइड इनलेट, गेट्स जेट्स, जोन ऑफ टर्बुलेंस, centrifugal action through coarser particles outwards. Classifier removes fine particles and fluids. होगा फ्लूइड एनर्जी मिल के डायग्राम्स. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फार्मेसी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू गाइज और मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय. और अगर आपको इस टॉपिक की नोट्स चाहिए होगी तो कमेंट में मेरे को बताना, आपको मैं सेंड करूँगा.